Hello everyone, welcome back to our lecture series of ring theory. We were discussing polynomials. इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन और कुछ इंपॉर्टेंट रेड्यूसिबिलिटी टेस्ट को पढ़ेंगे. उससे पहले we will discuss the definition of irreducible polynomial and reducible polynomial. For that we will consider an integral domain, and the moment we have an integral domain then we can think about the polynomial ring. Okay? हमने यूनिट्स के कंसेप्ट को डिस्कस किया कि जब किसी रिंग के ऐसे एलिमेंट जिनके इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, हियर द इनवर्स एलिमेंट्स आर विद रेस्पेक्ट टू द सेकंड ऑपरेशन विच इज मल्टीप्लिकेशन. तो किसी रिंग में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जिन जिन एलिमेंट्स के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं उन सभी एलिमेंट्स को हम यूनिट्स कहेंगे. ओके, एंड यू नीड द कंसेप्ट ऑफ नॉन जीरो. नॉन जीरो मीन्स जब भी हम फर्स्ट ऑपरेशन के आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशन है और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो ही है. तो यहाँ पर नॉन जीरो कहने का सेंस है कि हम ऐसे पॉलिनोमियल्स कंसीडर करने वाले हैं जो नॉन जीरो हो. इसका मतलब वो फर्स्ट ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट ना हो और दूसरा वो यूनिट भी नहीं हो. यूनिट का कहने का सेंस क्या है कि उसके लिए सेकेंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में इनवर्स एग्जिस्ट ना करते हो. ओके, so we are going to define a non-zero and a non-unit element as a irreducible polynomial. Okay, तो जब कोई भी आप irreducible polynomial के बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग में नॉन जीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट का डिस्कशन ही आना चाहिए. Okay, so let us start this lecture by writing the definition of irreducible polynomial first, and then on the foundation of irreducible we will define the reducible polynomial. Okay, so we are having definition, and firstly we will define irreducible polynomials. Okay, जब भी आपको एग्जाम में अगर रेड्यूसिबल पॉलिनोमियल के बारे में भी पूछा जा रहा है तब आप पहले इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल को ही डिफाइन करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि ऐसे पॉलिनोमियल जो रेड्यूसिबल नहीं है वो रेड्यूसिबल कहलाते हैं. ओके, तो चाहे इरेड्यूसिबल की डेफिनेशन पूछे या रेड्यूसिबल की, दोनों ही केस में यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल फर्स्ट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट दैट. लेट डी बी एन इंटीग्रल domain, and the moment we have integral domain then we can think about the polynomial ring. Okay, and a polynomial f of x from the polynomial ring d of x that is this is important. Okay, neither the zero polynomial, neither the zero polynomial nor a unit. Okay, in d of x is said to be irreducible over the domain D over D if whenever f of x is expressed as a product, which product that f of x is equal to g of x time h of x. तो हम इस पोलिनोमियल fx को किन्हीं दो मोर पोलिनोमियल के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो व्हाट वी विल कंक्लूड कि hx और gx में एटलीस्ट वन हैज टू बी अ यूनिट. दोनों में से कोई एक पक्का यूनिट रहा होगा. अगर ऐसा सेंस है तब हम इस fx को रिड्यूसिबल पोलिनोमियल कहेंगे. ओके, विद let me write that this product must be of the form that where gx and hx from d of x then zx or hx is a
यूनिट इन डी ऑफ एक्स। ओके, तो जब कभी भी हम किसी नॉन जीरो नॉन यूनिट पॉलिनोमियल को किन्हीं दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो दोनों में से एक अगर यूनिट है, दोनों भी हो सकते हैं, अगर दोनों में से कोई एक भी यूनिट है तब ही हम ऐसा प्रोडक्ट लिख पा रहे हैं, तो ऐसे किसी पॉलिनोमियल को हम इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, सो ये एफ एक्स हुआ हमारा इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं रेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की। reducible polynomial. Okay, either you can define that जब भी हम fx को gx टाइम hx लिख रहे हैं, तो neither gx nor hx are unit. Okay, is a unit, दोनों में से कोई भी यूनिट ना हो और उसके बाद भी हम किसी एक पोलिनोमियल fx को किन्हीं दो पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब हम इस पोलिनोमियल fx को रिड्यूस कर पा रहे हैं, और ऐसे ही पोलिनोमियल को हम रिड्यूसिबल पोलिनोमियल कहेंगे। ओके, और दूसरा आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यू फर्स्ट डिफाइन द इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल लाइक दिस, एंड देन you will say a polynomial which is not irreducible is called as irreducible polynomial. Okay, so we are just writing the definition of reducible polynomial on the basis of irreducible polynomial. ठीक है, so a non-zero non-unit element of d of x that is not irreducible over d is called reducible over d. Okay, so this is how we can define the reducible and irreducible polynomial. Okay, जब हम बात करें कि यहाँ तो हमने कहा कि इंटीग्रल डोमेन के लिए हमने पॉलिनोमियल्स डिफाइन किए। द मोमेंट वी हैव फिल्ड इन प्लेस ऑफ इंटीग्रल डोमेन देन सिनेरियो बिकम्स मोर कन्वीनियंट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा ही होना चाहिए दैट जब अगर फिल्ड हो तो उस केस में विल डिफाइन दैट अ नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स is said to be irreducible if fx cannot be expressed as a product of two polynomials of lower degree. Okay, तो ये सेंस ओके, लेट अस राइट कि ये डेफिनेशन कैसे बनती है। सो इफ d becomes a field then हम रेड्यूसिबल पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करेंगे? So we can define that let f be a field and f of x be a non-constant polynomial of f of x. Okay, then maybe we are going to call this f of x as a reducible polynomial. Then f of x is said to be irreducible if this f of x cannot be expressed as a product of two polynomials of lower degree. Okay, so let us understand this definition by some example.
we are having the example 1, and it is saying that discuss the polynomial f of x is equal to 2x to the power 2 plus 4 over q and second over z. ओके क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट है वो इंटीजर्स है, सो वी कैन कंसिडर एटलेस इंटीजर एंड एनी ऑफ द फील्ड और द डोमेन greater than this z. Okay, so let us write the solution. Solution is quite simple, just to discuss this fx in this z and then q. So f of x, that is equals to 2x to the power 2 plus 4, and if we say is 2x to the power 2 plus 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? We can write 2 times x to the power 4, x to the power 2 plus 4. Okay, but look at this 2. This 2 have a inverse in q but not in z. इसका मतलब जब हम fx को इसके किसी दो लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिख रहे हैं तो उनमें से कोई एक पॉलिनोमियल यूनिट बन रहा है. ओके, तो ये यूनिट कहाँ बनेगा? दिस q, इन दिस q, बट दिस इज नॉट यूनिट, नॉट अ यूनिट इन z. ओके, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/2, which is in q but not in z, right? तो what we can say कि हम z में इसे किन्हीं इस तरीके के नॉन यूनिट पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे. Okay, so this is reducible over z but irreducible over q. Okay, so this is what we can express here. 2 is unit in q but not in z. Okay, so we can say f of x can be expressed as product of two polynomials which are not a unit in z but a unit in q. Okay, so we can say this is not irreducible in q but reducible in z. Okay, so therefore f of x is reducible or irreducible over q but reducible over this z, right? So this is how we can identify कि हाँ ये जो फंक्शन है fx, this is irreducible over q but reducible over z. तो बेसिकली जब भी हमें कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है उसे हम इस तरीके के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे. ओके, अब इन सभी प्रोडक्ट में अगर हमें एक भी ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द यूनिट्स, तो वहां पर हम रिड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल का कंक्लूजन निकाल सकते हैं. ओके, और ये किस तरीके से होगा? लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट. द नेक्स्ट एग्जांपल says that discuss f of x, the same polynomial 2x2 plus 4 over r and over c. ओके, तो हम देखेंगे कि ये रियल नंबर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के लिए
किस तरीके से अपना reducibility और irreducibility behavior शो करता है. So again we can write f of x is equal to, now we are free, okay, so we can write this as 2 times x square plus 4. Again we can write this as f of x equals to square root of 2 x plus 2 iota and square root of 2 x minus 2 iota. Here you can see जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे then we will have 2x square plus 4. ओके, तो हम इसको ऐसे भी लिख पा रहे हैं, we can write this this also. So here you can see जब हम इस वाले पोलिनोमियल को डिस्कस करेंगे तो दिस इज इन दी रियल, और जब हम इसकी बात करेंगे सो दिस इज ओवर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. बट जब हम रियल, क्योंकि ये इस तरीके का फैक्टराइजेशन रियल नंबर सिस्टम तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जो फैक्टर हैं वो रियल नंबर सिस्टम से बिलोंग नहीं कर रहे, तो दिस इज विल बी ओवर आर. लेट अस पॉइंट आउट दिस, एंड दिस इज ओवर सी, राइट. तो अगर हमें एक भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है जिसके अंदर दोनों में से कोई भी पोलिनोमियल यूनिट नहीं है, तो उस केस में वी विल से दैट दिस इज रिड्यूसिबल. एंड जैसे हम क्या करेंगे, कोई भी पोलिनोमियल गिवन होगा उसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर्ड फॉर्म है उनको लिखेंगे कंसिडरिंग द फील्ड और द डोमेन की डोमेन हमें कैसे दे रखा है. जैसे अगर हम एफ के बारे में आर पे बात करेंगे, सो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी टू फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल एफ एक्स. और अगर जैसे ही हम सी पर बात करेंगे तो ये तो है ही 2x⁴ प्लस 4. इसके अलावा भी हम ऐसे कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम एफ एक्स को किन्हीं दो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट की फॉर्म में जब आर पे बात करेंगे तो इस एक तरीके से ही लिख सकते हैं, और जब सी पर बात करेंगे तो इन दोनों तरीकों से लिख सकते हैं. ओके, ओवर आर, and let me write that, and over C, and this is that over C only, right. तो हम क्या करेंगे, जैसे अब C के बारे में बात करें तो हम जितने भी पॉसिबल इसके फैक्टर या फिर प्रोडक्ट्स फॉर्म लिखेंगे और फिर देखेंगे क्या किसी एक में भी हमें ऐसा मिल रहा है दैट वी कैन एक्सप्रेस दिस पोलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स एंड neither ऑफ देम आर unit. Okay, so what we can conclude from this only, okay, I'm repeating कि आप जब भी पोलिनोमियल के जितने भी पॉसिबल फॉर्म हैं उन सभी फॉर्म को यहाँ पर लिस्ट करेंगे, और उन सभी में अगर आपको एक भी ऐसा मिल रहा है सो दैट यू कैन कंक्लूड कि ये पोलिनोमियल रिड्यूसिबल है, तो यू विल से कि हाँ हमारा पोलिनोमियल रिड्यूसिबल है ओवर सी एंड इररिड्यूसिबल है ओवर आर. ओके, सो reducibility के लिए we just need to identify only one product that shows कि हम fx को ऐसे किन्हीं दो पोलिनोमियल की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो what we can say, so f of x can be represented as product of two non-unit polynomials over C but not over R. Okay, so f of x is reducible over C but irreducible over R. Okay, so this is how we can identify the reducibility and irreducibility. Okay, बाकी हमने देख ही लिया कि इस पोलिनोमियल एफ एक्स को हम, जैसे इसका डिग्री कितना है 2, और हम इस पोलिनोमियल को किसी लोअर डिग्री के पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल रिड्यूसिबल है. अब ये पोलिनोमियल जिनके फॉर्म में हम लिख रहे हैं वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, सी में, तो सी पर ये रिड्यूसिबल है और आर पर रिड्यूसिबल नहीं है. Okay, so this is about the reducibility of the same polynomial over C and R.